guys, welcome to Being Woman with Chhavi. और हम लोग अभी हैं अपने हाउस बोट में and I told you that I'm going to give you a house boat tour, so here it is. But before that, don't forget to subscribe. Meet my new अरे यार woolen person. Meet my new woolen daughter. Person. So this is the hall of the houseboat. And आप देख सकते हैं कि इसको बहुत ही कश्मीरी तरीके से डेकोरेट किया गया है. और अरे वाह, ये हमारे लिए यहाँ पर क्या वेट कर रहा है. दिस इज कश्मीरी कावा. ठंड तो इतनी ज्यादा है that I don't know what is going to happen when I reach गुलमर्ग, क्योंकि यहीं पे मैंने तो अपने मैक्सिमम कपड़े पहन लिए. I'm wearing a fleece tights on the legs. उसके ऊपर I'm wearing leg warmers. I'm wearing woolen socks. I'm also wearing normal socks. I'm wearing a fleece cap. I'm wearing a woolen cap. Then I'm wearing a layer of full sleeve thermals inside. I'm wearing a sweater. I'm wearing this jacket and I'm wearing the muffler and these gloves. इतने सारे कपड़े पहनकर बैठी हूँ मैं यहाँ पर. और अभी मेरे हिसाब से सिर्फ 3 डिग्रीज है यहाँ पर. But very difficult. I'm red. I don't know what's going to happen. I'll tell you what all I'm wearing. What all are you wearing? Thermal up and thermal down. Then this pant on top of the thermal. Then this t-shirt on top of the thermal. Then this fleece. Then this jacket, this muffler, this cap. Inside this another fleece cap and a woolen hairband. And leg warmers. And woolen and socks. 3 socks. 3 socks and gloves. Yeah. And Adam, what all are you wearing? You don't know. Abu made you wear. बाहर ये हमारी बालकनी है जिसमें इतने सारे कपड़े पहनकर अच्छा लग रहा है. Mama, see this. If we do this, there is fleece. Then ज़्यादा धुआं कम से. Only मेरा बच्चा. You can see that it's really pretty. और यहाँ पर ये लोटस लीव्स हैं और बालकनी के बाहर there is this staircase which is going down. I wonder why. बोट के लिए शायद. चलो let's have the kava. यहाँ हाउस बोट में shoes are not allowed, so they have these house chappals here for everyone. और अरीजा का कहना है कि गरम गरम कावा का मजा तो ठंडी ठंडी बालकनी में ही है, तो हम लोग बाहर आके पिएंगे. हेलो जी. हेलो जी. Where you want to go, Adam? On the terrace. चलो let's see the terrace. चलो. You have the idea to go? Yes, I have the idea to go. Go. Keep walking. Keep walking. I'm behind you. Keep walking. Keep walking. Keep walking out. Out. And right. Go up. Oh. It's too big for you, Adam. Be careful, okay? Oh, फिर निकली? Wait, I'll give you. Yeah, bent. Careful. फिर निकल गई. ये क्या हो रहा है ये? So this is a terrace. Looks like a little gazebo. Open terrace. बहुत ही अच्छी है. और अभी यहाँ पे हल्की हल्की धूप आ रही है. और अब कपड़े भी अच्छे से पहन लिए. बेटा उस तरफ नहीं जाना है. Risky, okay? No, he cannot see on top. That is our, na? No. Below this is ours, बेटा. This. इसके नीचे. अब वो इसके नीचे बैठे. So this is the outdoor of the houseboat. और ये हम यहाँ पर बैक साइड पे आ गए हैं. अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी की हाउसबोट के जो रूम्स हैं वो. So first here we have a small pantry. और यहाँ पर एक कॉरिडोर है. वेरी वेरी कोजी कॉरिडोर. और यहाँ पर है पहला रूम. ये रूम है बच्चों का. There are 2 beds. This big bed is Ariza's. That little bed is Arham's. और यहाँ से भी बड़ा अच्छा व्यू है. बड़ा अच्छा नहीं है एक्चुअली, बट ठीक ठाक ही है. Okay, and here there's a bathroom, the dressing area and the bathroom with the bathtub. Okay, now we'll go to the other room. Ariza, I'm shutting this door ताकि कमरा गर्म रहे, ठीक है? This is the other bedroom. I didn't close the door.
And that is the dressing area. And this is my bathroom. Again with a bathtub. और अभी अरीजा और मेरे पैर जो है वो बिल्कुल नम हो चुके हैं. So we've come inside the room to warm them. Peter, close the door, please. How do you warm? Yes. So how do we warm the food? I'll show you how. Ta-da! ये मैं लाई थी अपने पैक के लिए, लेकिन काम आएगा हमारे पैरों पर. This is basically a heating pad. Can I do it, Mama? Yes, my love. I'm doing badam. ये देखो मस्ती हो रही है बेड पर. Can I have one badam? बादाम सारा दिन खाते रहना है बादाम. This is like बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो खाएं क्रिस्टल नट्स. Christmas nuts. लेके प्रभु का नाम. अभी करा देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे घर में पेंटिंग का काम चल रहा है, तो मेरे किचन का ही पेंट चल रहा है. हमारे घर में पेंटिंग का काम चल रहा है जोर शोर से, और जब तक हम लोग वापस पहुंचेंगे तब तक doors and all the cabinets and everything will be freshly painted and the walls will have a fresh coat. It will be so nice and the mess will be all clean. And Mama, can you give me one badam? Please. It's kaju, it's not badam. There is one badam. The packet is there. See that? You have to bring that. हम लोग अभी भी बैठ के अपने पैर गरम कर रहे हैं. No, इसमें है. नहीं राजा, ये काजू का पैकेट है बच्चा. Then give me na someone kaju. No, you get the badam. I'll give you one badam. Okay. It's right there. अभी हम लोग एक और हाउस बोट है यहाँ पर, which they are saying is really pretty. It's a new house boat. We'll just go take a tour of that and आपको भी दिखा देती हूँ. So this is basically the back side of the house boat. फिर से उतारनी पड़ेगी? Oh, फिर तो नहीं जा सकते. बाहर से देखेंगे. Okay, so house boat में जाके फिर से shoes उतारने पड़ेंगे, and I'm not willing to take off my shoes now because my feet have warmed with a lot of difficulty. Can't make them cold again. Wow, walnut wood. it's very pretty. Come, let's go. Okay. Wow, okay. So as you can see, the interiors are fresh, new, and they are very British. They are very pretty. और अभी हम लोग जाके ऊपर देखेंगे क्या है. He said कि आज चांद सा की स्नो होएगा. Yes, ऐसा मंजूर भाई बोल रहे हैं कि ठंड जिस तरह से हो गई है suddenly, looks like it's going to snow tonight. Let's see. Baby, what if it snows here only? Then we don't have to go anywhere. Then we can go back. That'll be funny. The main purpose of this trip was to see snowfall. Okay, so we might go for a boat ride just for half an hour. शायद मैं नहीं जाऊंगी because I don't feel like it, but Ariza और हम मोहित will probably go. हाँ, क्या? What? Okay. यहाँ से baby यहाँ से. हाँ. And here there is a small like a Kashmiri art kind of a boutique. We're just gonna see if there is something that we can buy. Shopping always helps, keeps you warm, helps in the winter. So he's saying कि पश्मीना की भी इतनी क्वालिटीज होती हैं, और क्या रियल पश्मीना है नहीं है वो बताना भी बिल्कुल फॉर अ नॉर्मल पर्सन लाइक मी इट्स इम्पॉसिबल. देन देयर आर दीज कार्पेट्स, इसमें से कौन सा हैंडमेड है कौन सा मशीन मेड है आप ऐसे बता ही नहीं सकते हो, और प्राइस में इतना फर्क पड़ जाता है दैट इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्थ व्हाट. This is called jama work. So this is again pashmina. दिस पश्मीना. So yes, and this is the needle embroidery. It's all done by hand. So this must be very expensive. ये Yes, sir. क्या price है This इसका? will cost you 65,000 65. because of this embroidery. The material is same, the 100% real pashmina, but the embroidery it will go more expensive.
So this shawl take near about 6 months to ready. तो हम एक काम करते हैं ना, ये 65,000 रुपीज की खरीद लेते हैं, उसके बाद एक 6 लाख रुपए की वेकेशन मारेंगे जहाँ पे इसको पहन सकें, क्योंकि बॉम्बे में तो 40 डिग्री में पहन नहीं पाएंगे. That will be value for money. इसको 65 का खरीद के इसको 2 लाख का बेच दो ना. आराम से. तो हम अभी आए हैं बोट राइड आधे घंटे के लिए चादर ओढ़ने. So I have come on the condition that there is a quilt here, a blanket here which I can oढ़ो, because बहुत ज़्यादा ठंड है. और देखो कितनी fog कितनी बढ़ गई है यार. देखो विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है, वहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है. And it's going to snow. ये देखो भाई, ये हमारा यहाँ का लोकल फ्लोटिंग मार्केट है. बारिश हो जाती है तो ठंड कम हो जाती है. हाँ. प्लस फॉग होता है तो ही सेट की जब फॉग होता है तब भी ठंड कम होती है. और ये मेरे को एक RPF वाला मिला था ट्रेन में राजधानी में, उसने भी बोला ओस नहीं गिरती. ओस नहीं गिरती. ओके आई गॉट इट. दैट्स बाय दैट लॉजिक. मुझे नहीं पता भाई, यहाँ पे बहुत फॉग है और यहाँ पे बहुत ठंड है, और हम लोग अभी बहुत गर्मा गर्म सूप पी रहे हैं, एंड वी आर वेटिंग फॉर डिनर टू कम. It's 7:15. It's just 7:15. Yeah. We are having dinner. मुंबई में तो कभी-कभी 7 बजे ऑफिस से घर आते. I am like desperate to get into bed. I'm desperate to eat कमल ककड़ी. So guys, आज तो इतनी ठंड लगी मुझे कि मतलब फोन निकालने के लिए हाथ भी निकाल नहीं पाई, और रिकॉर्ड का बटन प्रेस करने के लिए ग्लव्स भी निकाल नहीं पाई. So I don't know. I mean, I hope you enjoyed the tour that I gave you of the houseboat, हमारी वाली भी और जो दूसरी वाली थी उसकी भी. And stay tuned for a lot of more fun that I'll be having in Kashmir. And if you have any questions, please put them down in the comments and like the video, share it, and don't forget to subscribe to Being Woman with Chhavi. मैं रज़ाई में हूँ, and hence this is me signing out. Love and peace from me.